ओके सो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट रियल वेक्टर स्पेसेस. वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेक्टर स्पेसेस. इसके बेसिक कंसेप्ट को आपने समझना है. ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है. इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इट देयर विल बी नो इशू इन इट. I'll be explaining some of the example in detail, not all of them, or maybe solving some of questions in detail. And then you will do most of the questions yourself just to practice it. Okay, so first we define what do we mean by vector space. So let's suppose we have a set on which two operations are defined. One will be addition and the other one will be a scalar multiplication. In case of addition, we will need two vectors, whereas in case of scalar multiplication, we will be taking one vector and one scalar. Usually call that this scalar, this constant that will be coming from a field which is usually a set of real numbers. So let's suppose we have a set of vectors V, and the first condition on it that it will be a non-empty set. From here you can conclude one thing, that we don't have an empty vector space. A vector space will always be non-empty. So we say that this set V will be a vector space if it satisfies the following 10 conditions. So if you want to check whether a set of vectors is a vector space or not, you have to check all these 10 conditions. The first condition is known as closure property. So you need to understand what do we mean by closure property. It means if you take any two vectors or elements u and v from the set V, the operation addition, once applied on both of them, you get a resultant vector. That resultant vector must belong to the set V. This is known as closure property. For example, if I consider a set of natural numbers, I just want to check this closure property. I hope everybody knows what do we mean by natural numbers. That's 1, 2, 3, 4, and so on. You pick any two numbers from here. Let's suppose I take 1 and 3. You apply the operation of addition. In this case, that's a usual operation. That is equal to 4. Now you would check, does 4 belong to this set? The answer is yes. From here, you need to note one point. We don't need to check two specific values. You need to know the general concept of particular set. General concept means that it is always known that sum of two natural numbers is always a natural number. That's a general concept regarding set of natural numbers. The sum of two natural numbers is always a natural number. Similarly, the sum of two real numbers is always a real number.
But if you talk about prime numbers, say 2, 3, 5, and so on, so can we say that sum of two prime numbers is always a prime number? So in this case, the answer is no, because 3 is a prime number, 5 is a prime number, their sum is 8, so 8 is not a prime number. So this basically, if we call this one as set P for prime numbers, so you would say 8 is not a prime number. If you consider a set of matrices, let's suppose we denote that by M 2 cross 3, it is the set of all 2 cross 3 matrices A, B, C, D, E, F, where A, B, C, D, E, F are any real number. Now, if you apply this operation of addition on it, the first step is addition is possible because we will be having 2 cross 3 matrices, and sum of 2 cross 3 matrices will always be a matrix of order 2 cross 3. If you take one matrix like that plus the other matrix is something alpha, beta, gamma, eta, zeta, whatever, and omega. If we take their sum, the sum matrix will also be of order 2 cross 3. So from here we conclude that sum of two 2 cross 3 matrices is always 2 cross 3 matrix. So keeping in mind that we will be talking about a set of vectors in journal framework all the time. If it is not satisfying a certain condition of closure condition, we may give an example, a specific example. We would say this specific, like in this case I explained with example 1 and 3. Sorry, in this case I take an example 3 and 5 and I said it doesn't belong to P. So we don't give a general statement in this case, because in some cases it may be 2 plus 3 is 5 is a prime number, but it is not generally true. So we take a specific point. We may take two specific points from it, 3, 5, or maybe 5 and 5 both, and so on. So this is a very important property you have to check, so you should understand this property. The second one is a commutative property. Again, you would check in generalized framework that whether addition is commutative or not, it commute with each other. The second property is known as the commutative property. Third property is known as associative property. Again, we would check that in general framework. So you see that natural numbers commute with each other, natural numbers follow associative property, right? Real numbers follow the both properties, and so on. With respect to usual addition, keeping in mind there will be a word used, usual addition. Usual addition means 2 plus 3, that is always 5. We can have unusual addition as well, that is 2 plus 3 is 6. Or we can have 2 plus 3, that is 9, or 2 plus 3, that is 8. That will be termed as unusual operations. So in case of usual operation, commutative and associative law both holds in different sets. In some sets it may not be satisfied. So for a vector space, that these two conditions must be satisfied as well, that the set must be commutative, set must be associative. The fourth condition, there should be a 0, there should be an additive identity in the matrix, in the set. We satisfy this condition that u plus 0 give you back that u. Again, in some cases it may not be the case. Like in natural number, we don't have any element like 0 which is added to any natural number and that gives you 2, because 0 is not a natural number. So it means natural numbers cannot be a vector space. These two conditions are satisfied, whereas the fourth condition
is not satisfied in natural numbers. So there is no identity element in the natural numbers. In case of integers, we can say that this condition is satisfied because integers contain 0, plus minus 1, plus minus 2, and so on. So condition number 4 is not satisfied in this set, whereas condition number 4 is satisfied in set of integers. Condition number 4 is satisfied in real numbers. Condition number 4 is satisfied again in matrices of our 2 cross 3 or m cross n generally as well, because 0 matrix behave alike. The fifth property is what that is for any vector or for any element u in V, there must be its negative, and that also should belong to the set V as well. Like in this case, you see in natural number again doesn't satisfy, but don't recheck that. Once we concluded that n is not a vector space, so you don't need to check the rest of the properties. In integers, the condition is satisfied because you see if 1 is an integer, minus 1 is also integer, and 1 plus minus 1, that always give you identity element 0. If 2 is an integer, minus 2 will also be an integer. If 3 is an integer, minus 3 will also be an integer, and so on. So it means condition number 5 is satisfied in set of integers as well. It is also satisfied in real numbers as well, because if x is a real number, minus x is also a real number. Right. In matrices, if we have a matrix 1, 2, 3, 2, 1, 0, so its negative will also be a 2 cross 3 matrix. If this is a matrix A, so minus A, that basically is defined as minus 1, minus 2, minus 3, minus 2, minus 1, and 0. So if this is a 2 cross 3 matrix, its negative is also a 2 cross 3 matrices, and M23 that contains all matrices of order 2 cross 3. Keeping in mind, all matrices means all matrices. Now we move towards the other set of conditions. Sometimes we classify that into alpha group of conditions, which contains all the conditions related to addition, and beta types of conditions or group of conditions which are related with the scalar multiplication. In some books you would see these notation alpha, beta as well. So in beta conditions, the first condition is if you take any vector from V and you multiply that with a non-zero, with a scalar, sorry, it could be 0 as well, with any scalar, with any real number, that must belong to V as well. Now the question is this condition satisfied in integers? So in integers, we have 0, plus minus 1, plus minus 2. If I pick one integer from it, let's suppose I pick 10. So 10 is an integer. 10 belongs to Z. I multiply this with a number. Yeah, do you have any question? You can simply text me. मैसेज कर लें ग्रुप में, वहीं पे मैसेज करें. So if 10 belongs to Z, I multiply that with 1 by 3. So in this case, U is what that is 10 and C is 1 by 3. Now if you find C multiplied by U, that means 1 by 3 times 10, which is 10 by 3, and 10 by 3 is not an integer. It means that condition number 6 is not satisfied with set of integers.
Now, can we check this condition and in real numbers? So the answer is yes, we can check that. And in real numbers, if you take any real number, I have taken 10 is a real number, and you multiply that with any real number, like 1 by 3, so 1 by 3 multiplied by 10, which is also a real number. So real numbers is satisfying this condition number 6 as well. Again, if you move towards the matrices, so the set of matrices, if you multiply by any scalar, a matrix of order 2 cross 3 will remain a matrix of order 2 cross 3. A scalar multiplication with matrices will not change the order of the matrix. Right. And then the next one is what? It is the resultant of two vectors multiplied by a scalar is same as multiplying each vector by a scalar and then taking their resultant will give you same. ओके, क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए हैं u और v और उस पे आपने एडिशन अप्लाई कर दिया, उससे जो नया एलिमेंट आ गया जिसको हम रिजल्टेंट ही कहते हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो भी उसी सेट को बिलोंग करेगा। अगर वो हर एक के लिए बिलोंग कर रहा है, मैंने कहा था कि जनरलाइज फ्रेमवर्क में होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, जिससे मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर में इट्स ओके, इंटीजर्स में इट्स ओके, बिकॉज आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लें, उनका सम ले लें, वो भी इंटीजर रहता है। फिर मैंने कहा कि अगर हम प्राइम नंबर्स ले लें तो प्राइम नंबर्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, बिकॉज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी अ प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है वो उसको बिलोंग नहीं करता। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, सो c इंटू यू प्लस वी, इसका मतलब ये है कि आपने u और v का रिजल्टेंट लिया और फिर आपने c मल्टीप्लाई किया रियल नंबर, एंड देन आपने अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर से रिजल्टेंट ले लिया। तो दिस इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेक्टर्स ओवर कांस्टेंट्स है या स्केलर है। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, इसमें c प्लस डी इंटू यू दैट इज इक्वल टू c इंटू यू प्लस डी इंटू यू। दिस इज आल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर्स ओवर स्केलर्स हैं। दिस इज c डी यू, वी मे कॉल अगेन दिस इज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें स्केलर और साथ में एक वेक्टर आएगा। इसका मतलब यह है कि पहले आपने u के साथ d मल्टीप्लाई किया और फिर आपने c मल्टीप्लाई किया, और आपने c और d दोनों को एक साथ में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और फिर आपने u के साथ मल्टीप्लाई किया। दैट विल गिव यू सेम। इफ दैट गिव यू सेम वैल्यू, that means the condition is satisfied. The last condition is what? That is, if you multiply this vector with 1 and you get the same value. Sometimes obviously it will not be the case. You might be thinking कि ये तो हमेशा के लिए ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आगे आप देख लेंगे, इन डिफरेंट केसेस यू वुड सी कि ऐसा नहीं है। सो ऑल टुगेदर, इन कंक्लूजन, एक सेट वेक्टर स्पेस होगा अगर वो ये 6 कंडीशन ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 5 कंडीशंस जो हैं वो सिर्फ एडिशन के साथ हैं, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं,
और जो बाकी 5 हैं उसमें एडिशन भी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, राइट। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू चेक फॉर अ सर्टन सेट। अब इसमें कोई टेक्निकल चीज़ इस तरह नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें यह है कि जो जिस सेट को हम चेक करते हैं क्या वो वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो उस सेट की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स के बारे में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़े हुए हैं पिछले क्लासेस में, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि रियल नंबर जो हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। द आंसर इज़ येस। नाउ यू मस्ट नो व्हाई डू आई से येस। रियल नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ ओबे करते हैं। द आंसर इज़ येस, बिकॉज 2+3 हो, 3+2 हो। लेकिन जनरल फ्रेमवर्क में होता है, बिकॉज बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई, कुछ नंबर्स के लिए, कुछ एलिमेंट्स के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे और कुछ के लिए वो सेटिस्फाई फिर नहीं होंगे। तो आपको जनरल उसमें याद रखना है आपने इसको। देन वी talk about third condition. The third condition, real numbers are associative. The answer is yes, they are associative with respect to addition. They are not associative with respect to subtraction, but they are associative with respect to addition. So condition number 3 is satisfied. Condition number 4, क्या रियल नंबर्स में ज़ीरो होता है? द आंसर इज़ येस, देयर इज़ अ ज़ीरो इन इट। तो कंडीशन नंबर 4 सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 5, क्या हर एक का नेगेटिव मौजूद है? द आंसर इज़ येस। अगर हम 3 ले रहे हैं तो -3 भी रियल नंबर होता है, और दोनों का सम क्या है? उससे ज़ीरो आता है। तो 3 + -3 अगर लेंगे तो उससे ज़ीरो आता है। तो कंडीशन नंबर 5 इज़ आल्सो सेटिस्फाइड, right? So these are the alpha conditions satisfied. Then we talk about beta conditions. So number 6, that is अगर हम किसी भी रियल नंबर के साथ एक दूसरा रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बिलोंग करेगा? द आंसर इज यस, इट डज बिलोंग टू इट। अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड करके थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या दो रियल नंबर्स को ऐड करके उसको फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, दे आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन रियल नंबर्स। तो कंडीशन नंबर 7, 8 both are satisfied in real numbers. Condition number 9 is also associative in real numbers, so it is also satisfied. And if you multiply any real number with 1, you will get back the same real number. So condition number 10 is also satisfied. So all 10 conditions in this case for set of real numbers are satisfied. Therefore, we say R is a vector space. So set of real numbers is what that is, a vector space. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लें, हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, तो क्या रियल नंबर्स जो हैं वो वेक्टर्स कंसीडर होंगे? तो द आंसर इज़ येस। इन दिस केस द रियल नंबर्स विल बी कंसीडर्ड वेक्टर्स। और साथ में रियल नंबर जो हैं वो फील्ड को भी डिफाइन करते हैं। तो फील्ड तरह आपको उसमें नहीं, आपको उसको फ़िलहाल एज इट इज़ यूज़ करें। तो जो स्केलर्स हम ले रहे हैं वो भी रियल नंबर्स हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स इज बिहेविंग लाइक बोथ सेट ऑफ वेक्टर्स एंड सेट ऑफ स्केलर्स एज वेल। दोनों इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको। अब आगे मैं जा रहा हूँ कुछ मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ओके, जो भी आते हैं हमारे पास। सो इफ़ यू टॉक अबाउट R2, तो R2 that basically means R cross R, which contains all order pairs of the form XY, where XY both belongs to R. And in this case, the operations are usual operation. The usual operation means if you add two order pairs together, x1, x2 plus x1, y1, sorry, and then we have x2, y2. So their usual operation is what? x1 plus x2, y1 plus y2. This is the usual operation, the first operation. This is addition कहते हैं. The second operation, when you multiply it with the c, that is cxy, it will be cx into cy.
These are the two operations defined on R2. That's why we call it standard operations or usual operations. Is a vector is a vector space. Why? ये अगर आप इसी इसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं, एक थ्योरम है 4.1 जिसमें ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं वेक्टर्स में. Because if you check that, if I take any two vectors x1 y1 and x2 y2 and we add them, we still get an order pair. हमारे पास वही ऑर्डर पेयर आएगा. तो अगर ये बिलोंग करता है आर स्क्वायर को, ये वेक्टर बिलोंग करता है आर स्क्वायर को, तो इनका जो सम है वो भी बिलोंग करेगा. आई विल जस्ट टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है एग्जाम में. फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 3 4. आपने जनरलाइज फ्रेमवर्क में लेना होता है. आई टेक 3 4 प्लस 5 3 और 5 minus 2, whatever, it could be anything, and we apply addition on it. So 3 plus 5, that is 8, whereas 4 minus 2, that is 2. Is it again an element of R square or R2? The answer is yes, because we are having 8 2, and R square is containing all order pairs for any real numbers x y. Right? So you will be not doing like that. As I said earlier, you have to check that in generalized framework. Like you will be taking x1 y1, if that is one element, and x2 y2 is another element of R square, their sum, as I defined it, is the standard operation. So x1 plus x2, y1 plus y2, which is again an order pair of real numbers, so that will also belong to R2. So condition number 1 is satisfied. It doesn't matter if you change the direction, this just means that you are taking minus x2 minus y2. It doesn't matter. यहाँ पे अगर मैं ले लूँगा -5 और फिर +2, so I'll get 3 minus 5 is -2 and 4 plus 2 is 6. We don't care about that thing, direction, or because you just check the multiply by negative number. So it doesn't matter if you are multiplying that with a negative number, because it contains all vectors of any direction. Is it in one direction or another direction, doesn't matter. Similarly, vectors are commutative as well, so you have to go that in generalized framework. So condition number 2 satisfied. Vectors are associative as well. Commutative, you can check that as well. If I add two vectors x1 y1 from one direction, x2 y2, so I'll get x1 plus x2 y1 plus y2. Now these are real numbers, they can be rearranged like x2 plus x1 y2 plus y1. I can just interchange them, and then I would write back in this form x2 y2 plus x1 y1. So you see that if you have called the first one as u1 plus u2, and then we ended with u2 plus u1. So this condition is satisfied. Right, the same thing, vectors are associative as well. You take resultant of two vectors u and v first, and then you take its resultant with w. It will give you, if you take resultant of v and w first, and then you take resultant with u, you will get same thing. So that associative property is satisfied in vectors as well, in vectors in plane. We have a zero vector as well, 0 0, that also belong to R2. And what is the property of it? I'm talking about property number 4. You add this vector to anyone, you will get back the same vector. So x plus 0 is x and y plus 0 is y. So you get this one. Right? Condition number 5 is also satisfied, because if you have a vector xy in R2 minus x
minus y, which is the negative of the vector, is also belong to R2. And their sum will be what? xy plus minus x minus y, that is 0, 0. So condition number 5 is also satisfied. In this case, negative of a vector means you have to change the sign of the components. So it means all alpha conditions are satisfied. देखिए यहाँ पे जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं ना, तो रियल नंबर में दो तरह ज़ीरोज़ हैं. ज़ीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर. ओके, तो ज़ीरो जो है इट इज़ ऑब्वियसली, जब हम रियल नंबर को एज अ वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं तो ज़ीरो विल बी कंसीडर्ड एज अ वेक्टर and 0 will be considered as a scalar as well. इसका हम एज अ वेक्टर भी ले सकते हैं, इसको हम एज अ स्केलर भी ले सकते हैं. ठीक है, डिपेंड करता है. अगर मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ तो मैं इसका स्केलर लूँगा, अगर मैं वेक्टर स्पेस की बात करूँगा तो आई विल बी कंसीडर दैट एज अ वेक्टर. सो 0 इज अ वेक्टर एज वेल. Okay, number 6 condition is if you multiply a vector by a scalar, it will again remain the same vector in the plane. Like you see, आपके पास वेक्टर है xy जो कि कहाँ को बिलोंग करता है, R2 को बिलोंग कर रहा है. If you multiply that with some constant c multiply by xy, so that will give you cx and cy, which is also an element of R2. So condition number 6 is also satisfied. Condition number 7, if you add two vectors ux plus y, u plus v, and if u is what? If that is x1, y1, and v is another vector, that is x2, y2. Now what about u plus v? The u plus v, that basically means sum of these two vectors. So it is x1 plus x2, y1 plus y2. And then you multiply this with a constant c. So c into u plus v, whenever I say constant, that would mean scalar. So it means cx1 plus cx2, comma, cy1 plus cy2, which might be separated as cx1, comma, cy1 plus cx2, comma, cy2, where we may take common c from the first one. So it is cx1 y1 plus cx2 y2. That means c into u plus c into v. So the condition number 7 is also satisfied. Condition number 8, in that case you will take the sum of scalar first. Let me go here. Condition number 8. So it means c plus d multiplied by a vector u, where I would mean vector u is x into y. By applying that condition, usual operation, we'll be having what? That is c plus d into x, comma, c plus d into y. Because you just multiply this complete scalar to x and this to y. Now again applying distributive law in real numbers, I could write that as cx plus dx, comma, cy plus dy, which could be separated and written in separate way, cx cy plus dx dy, where I may take c common from the first, so cxy
plus D and then xy. So the first one is what? That is Cu plus D U as well. So you see that C plus D into U is equal to Cu plus Du. So condition number 8 is also satisfied. And then this condition can also be checked. Condition number 9. So we have du first. So du means that is dx dy, then cdu, that is what, multiplying c inside. So we get c into dx comma c into dy. Now you know that real numbers are associative, so this can be written as cd into x comma cd into y, and then I may take this cd common from it. So cd common, and then we have x comma y, which is cd into u. So condition number 9 is also satisfied. And 10 is very straightforward, because if you multiply this order pair with 1, which is u obviously, so that will give you xy back, and then you have u. So all conditions in this case are satisfied. So R2 with standard operations is a vector space. The same thing can be extended towards R3 as well. In R3 we will be having triples instead of order pairs. R4 as well. In R4 we will be having 4 tuples. In R5 we will be having 5 tuples, and generally in Rn we will be having n tuples. You may take screen shot of it to save these properties. Okay, if you have any question you can ask in message, otherwise I move forward then. Okay. So the next example is what is Rn. So first you need to understand what we mean by Rn. So Rn basically contains, it's a set of n tuples. The concept is exactly the same what we have done in case of R2, right? So Rn, that would contain n tuples. So I would write Rn in the form of what? Like this one. It's x1, x2 up to xn. Keeping in mind this element would contain n components. Right, where all these xi's will be a real number. Right, the concept is exactly the same what we have done in case of R2. In R2 you will just replace this n with 2. So all these conditions are set with usual operation. Keeping in mind with standard operation, we may change operation, and we would do that later on, and then we will check all these conditions again, that whether it is forming a vector or vector space or not. ठीक है, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास अब जनरलाइज हो गया है, हमारे पास n कंपोनेंट्स होंगे. जिस तरह से R2 में पेयर्स थे x1 x2 x2 x3 1 2 1 4 लाइक दैट. यहाँ पर क्या होंगे, ये जनरलाइज फॉर्म में है. तो इट इज़ आल्सो फॉर्मिंग अ वेक्टर स्पेस विद स्टैंडर्ड ऑपरेशंस. All conditions will be satisfied in this case as well. Okay, let's suppose we consider a set of matrices of order 2 cross 3. So here we'll be talking about matrices, and keeping in mind now in this case the matrices will be considered as vectors. The operation in this case are usual matrix addition,
In that case, you know how do we add two matrices. Okay, we simply add, if you have one matrix is A, the other one is B, we discussed that, and you know that the sum will be simply A11 plus B11, A12 plus B12, and so on. We talk about all matrices of order 2 cross 3, and the sum of two matrices of order 2 cross 3 is also a matrix of order 2 cross 3. So that also belong to, because this set, which is denoted by usually M23, so this set contains all matrices of order 2 cross 3. All means everything. You give any value to A11, A12, A13, you would see that element in the set, right? Whereas the scalar multiplication, you know, in matrices is defined as, that is multiplying every entry of the matrix by that scalar. So CA11, CA12, and so on, CA13, the same thing in second row as well. So all conditions are satisfied in this case as well. So this set is also forming a vector space. I hope you can check all these conditions. Because the matrix is satisfying the closure property, the answer is yes, it does. Number 2, matrices with respect to addition, are they commutative? The answer is yes, they are commutative, because we know that we have studied the properties. I already asked you in last lecture that study all the properties in matrices with respect to addition. So A plus B is always equal to B plus A in every matrix of a matrix of any order when addition is possible. So this is satisfied. You know that matrices are associative. A plus B plus C is same as A plus B plus C, because matrices satisfied associative law. Number 4, null matrix is also can be of order 2 cross 3 as well. So this matrix is always in M23, and its sum with any matrix will give back the same matrix. So this matrix A plus 0 is always equal to A. Condition number 5, if we have one matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, if that is an element of M23, so is negative of this one. If this is matrix A, so minus A, which would mean negative of all the entries, A11 minus A12 and so on, will also be of order 2 cross 3, so that also belongs to M23. So all alpha conditions are satisfied. Similarly, in case of beta conditions, if you multiply this matrix with a scalar with C, you will get CA11, CA12, CA13, that also belongs to M23. So that condition is satisfied, right? Condition number, this is condition number 6. Then condition number 7 was, if you multiply that C with A plus B matrices, that is CA plus CB as well. Condition satisfied. Number 8, we have C plus D into matrix A, that is same as CA plus CD. If you go back DA, if you go back to the last chapter, you would see all these properties in the matrices. And then if you multiply C with D times A, it would be same as CD times A. And if you multiply a matrix A with 1, you will get back that matrix A. So all conditions are satisfied. Therefore the matrix is what? This set of matrices is what? Of this order, they are forming a vector space. ओके, कंडीशन नंबर 1 जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो मैंने आपको जनरली बता दिया है कि कोई भी हम दो मैट्रिसेस ले लें 2 क्रॉस 3 का, एक मैट्रिक्स आप ले लें 1 2 3 3 1 1, ये 2 क्रॉस 3 का है. दूसरा मैट्रिक्स आप ले लें 1 1 5 -1 2 0. यू कैन पिक एनी टू मैट्रिसेस एंड यू एड देम. इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है. इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है. तो जब इनको हम ऐड करेंगे
तो इनका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आएगा। द सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस विल आल्सो बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, सी दैट। तो ये लाजमी बात है, ये कहाँ पे होगा, ये भी M23 को बिलोंग करेगा, दैट फॉर श्योर। अगर ये दो मैट्रिसेस बिलोंग कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 है, तभी इनकी एडिशन पॉसिबल है। एंड द ऑर्डर ऑफ देयर सम इफ दैट इज सी, इट आल्सो बी 2 क्रॉस 3। तो इफ दिस इज an element of M23, this is an element of M23, so this will also be an element of M23. That's why condition number 1 is satisfied. Next example is the vector space of all polynomials of degree 2 or less. In this case, we usually denote that by P2. P2, capital P2. Small p is used for the polynomials, whereas capital P that is used for set of polynomials. So P2 x that contains all polynomials of order less than or equal to 2. A0, A1x plus A2x square, where A1, A0, A2, they could be any real number. पहले इस बात को समझ लें, यानी क्या इस पाइनॉमियल में कांस्टेंट पाइनॉमियल, इस सेट में क्या कांस्टेंट पाइनॉमियल्स हैं, मतलब 1, 2, 1/2, 3/4, क्या ये इस सेट में है? द आंसर इज यस। इफ यू टेक A1 0, A2 0 एंड A0 कुड बी एनीथिंग। क्या इसमें 0 भी है? द आंसर इज यस, इसमें 0 भी है। क्या इसमें -1 है? द आंसर इज यस। अगर मैं A0 को -1 ले लूँ, बाकी A1 A2 दोनों को 0 ले लूँ, तो यस इसमें सारे शामिल हैं। क्या इसमें लीनियर पॉलिनॉमियल्स हैं? द आंसर इज यस। क्या इसमें x है? द आंसर इज यस। क्या इसमें 1 + x है? द आंसर इज यस। क्या इसमें 1 + 3x है? द आंसर इज यस। All linear polynomial, all polynomial of degree 1, they belongs to P2x. And what about the quadratic polynomials? The answer is yes. Do we have x square in there? Yes. Do we have 1 + x square? Yes. Do we have 1 + x + x square? The answer is yes. Or 1 - 3x + 4x square? The answer is yes. So this polynomial set contains all polynomials of degree less than or equal to 2. Now you must remember generalized rule. If we have one polynomial of degree less than or equal to 2, another polynomial of degree less than or equal to 2, their sum will also be a polynomial of degree less than or equal to 2. कोई भी आप polynomial ले लें, उनको ऐड करोगे, ठीक है ना, तो उनका जो सम होगा उसकी डिग्री 2 से ज़्यादा नहीं होगी। You see 1 + x square and with -1 you will get what? We will get something x square, जो कि यहाँ पे मौजूद है। अगर ये -x square है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 भी मौजूद है। तो सम ऑफ एनी टू पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री लेस, कीपिंग इन माइंड डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, एक होता है डिग्री इज इक्वल टू 2, वो फिर वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है ना। अ पॉलिनॉमियल, सेट ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू 2, दैट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, बिकॉज इसमें कांस्टेंट्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब है 0 उसमें नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल एक 1 + x square ले लें, दूसरा 1 - x square ले लें, तो इनका जब सम आप लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वी गेट 2, तो 2 इसमें मौजूद फिर नहीं होगा। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, वी टॉक अबाउट पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, राइट। सो कीपिंग दिस इन माइंड, सो इसको भी अकॉर्डिंगली हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये भी वेक्टर स्पेस बनता है। सो द सेम थिंग इट्स एक्सटेंड फ्रॉम P2 to P3 एज वेल। हम P2 की बात करें, हम P3 की बात करें, हम P4 की बात करें, जनरली हम बात करें Pn की, तो Pn इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स हुज डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू n। हम अगेन इक्वल टू n की बात नहीं कर रहे, लेस देन और इक्वल टू n की बात कर रहे हैं, एंड इसमें सारे पॉलिनॉमियल्स होंगे डिग्री n के, सारे पॉलिनॉमियल्स डिग्री n-1 के, n-2 के, n-3 के, टिल डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0 के सारे पॉलिनॉमियल्स में मौजूद होंगे।
तो ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन इसमें यही है कि जब हम दो पॉलिनॉमियल्स को ऐड करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने उनके कोफिशिएंट्स को अकॉर्डिंगली ऐड करना है। यानी आपके पास एक पॉलिनॉमियल, अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल ले लूँ, 1 + x + x माइनस एक्स स्क्वायर है, और दूसरा पॉलिनॉमियल हम ले रहे हैं, सपोज करें 2 - x + 3x स्क्वायर, कुड बी एनी पॉलिनॉमियल कीपिंग इन माइंड, राइट। जब इनको हम ऐड करेंगे तो कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ ऐड होता है। यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस दैट 1 + 2 = 3, 1 - 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड -1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। नाउ इज इट अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री लेस दैन इक्वल टू 2? द आंसर इज यस। तो ये भी इसको बिलोंग करेगा, P2 को बिलोंग करेगा। तो ये कंडीशन का मतलब ये है। और सेकंड जो हम इसमें डिफिनीशन कर रहे हैं, यही स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं। If you multiply a polynomial with some number 2, so that would mean multiplying every coefficient with 2. That will become what? 2 + 6x + 2x square. So you see, if it's a polynomial of degree less than or equal to 2, multiplying by square will give you a polynomial of degree less than or equal to 2. So it is also a vector space. जी साले, आपके मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हैं। What do you mean by sir AG? इस इफेक्ट नहीं पड़ता, डिग्री सेम है या डिफरेंट हो, बिकॉज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब ये है, मैं ले रहा हूँ एक 1 + x और दूसरा मैं ले रहा हूँ 1 + x स्क्वायर। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू P2। ओके, तो इफ यू एड देम 1 + x + 1 + x स्क्वायर, व्हाट डू वी गेट? We get 2 + x + x square, which is also an element of P2. P2 contains every polynomial whose degree is less than or equal to 2. तो ज़रूरी नहीं कि दोनों की डिग्री सेम होंगे। एक डिग्री आप 1 ले लें, दूसरे का डिग्री आप 2 ले लें, यू कैन टेक ईदर वन, डजंट मैटर, राइट। तो ये सारे के सारे जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि पॉलिनॉमियल जो है वो कम्यूट भी करते हैं, पॉलिनॉमियल जो है वो एसोसिएट भी होते हैं, जीरो पॉलिनॉमियल भी मौजूद है। अगर 1 + x + x स्क्वायर पॉलिनॉमियल है तो उसका नेगेटिव b पॉलिनॉमियल होगा, राइट। सो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर व्हाटएवर जितने भी हैं वो सारे के सारे सेटिस्फाई होंगे। Next, we talk about the vector space of continuous functions. In this case, we are having a set, we can call that capital F, right, which is defined or which is continuous on an interval -∞ to infinity, continuous everywhere. That's what we say, right? So it contains all functions, the set of all functions which are continuous everywhere. F must be continuous in the interval -∞ to +∞. Okay, so let me check all the conditions. क्या condition number 1 satisfy हो रहा है? अगर f और g दो functions हैं f में, इसका मतलब है कि f और g दोनों functions क्या हैं? They are continuous. अगर ये continuous है तो इनका sum भी continuous होता है। The sum of two continuous function is always continuous. It's a rule. Condition number 2, क्या f plus g plus f के बराबर है? The answer is yes. क्या f plus g plus h तीन functions अगर हम ले रहे हैं तो क्या f plus g plus h is it same as f plus g plus h? The answer is yes, because functions जो हैं वो associative law को hold करते हैं। क्या f of x is equal to 0? Is this function a continuous function? The answer is yes, because zero function है, आप देख सकते हैं ये zero function होगा। अगर मैं ग्राफ को ड्रा करूं, that is a x-axis. I hope you remember from calculus, continuous function का मतलब यह है कि उसकी ग्राफ में कोई होल ना हो ज्योमेट्रिकली। तो आप देख सकते हैं कि इसके जब हम f of x equal to 0 लेंगे तो f of x equal to 0 क्या होगा? वो हमेशा के लिए x एक्सिस के ऊपर इसका ग्राफ आएगा और x एक्सिस के ऊपर इसका कोई भी होल नहीं रहेगा। तो ये दिस फंक्शन इज ऑलवेज
कंटिन्यू. सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये भी बिलोंग कर रहा है उसको, दैट बिलोंग्स टू व्हाट, एफ, कैपिटल एफ. अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो क्या उसका नेगेटिव भी कंटिन्यूस होगा? द आंसर इज यस, बिकॉज माइनस की वजह से उसमें कोई होल नहीं आएगा. सो माइनस एफ ऑफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूस, और दोनों के सम से क्या आता है? 0 आता है. तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, अल्फा कंडीशन जो है. Similarly, if you talk about beta conditions, so condition number 6, if you multiply a function by a scalar, अगर f कंटिन्यूस है तो क्या सी एफ कंटिन्यूस होगा? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एक फंक्शन को, क्या उसका कंटिन्यूटी पे कोई फर्क पड़ेगी? द आंसर इज नो. तो ये कंटिन्यूस रहेगा. ठीक है. नंबर 7 में आपने पहले f और g को ऐड किया, उसके साथ आपने c मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज सेम एज c मल्टीप्लाई बाय f प्लस c मल्टीप्लाई बाय g, बिकॉज फंक्शन विद कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करते हैं. आपने c प्लस d के साथ f को मल्टीप्लाई किया, तो दैट विल गिव यू c मल्टीप्लाई बाय f प्लस d मल्टीप्लाई बाय f. वही चीज़ है. किसी भी पॉइंट पे आप देख लें, फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करोगे, उनके साथ c प्लस d को मल्टीप्लाई करो या c को मल्टीप्लाई करो और d को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, तो एक ही चीज़ है. नंबर 9 में कंडीशन क्या है कि अगर हम पहले d मल्टीप्लाई करें उसके साथ, फिर c मल्टीप्लाई करें, या पहले c और d को मल्टीप्लाई करके f के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में ऑब्वियसली फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, इफ आई कंसीडर x स्क्वायर इज कंटिन्यूस एवरीवेयर. अब मैंने पहले 3 मल्टीप्लाई किया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, और फिर 2 मल्टीप्लाई किया, राइट. तो क्या इज इट द सेम अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ 6 मल्टीप्लाई करूं? तो आंसर इज यस. दिस इज व्हाट, दिस इज 2 इंटू 3f. इज इट सेम एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू f? सो द आंसर इज यस. अगर हम फंक्शन के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे कंडीशन नंबर 10 में, तो ऑब्वियसली फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 1 मल्टीप्लाई बाय f, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू f. अगेन स्पेसिफिक एग्जांपल, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर के साथ, व्हाट वुड यू गेट? x स्क्वायर बैक. तो इट मीन्स ये जो सेट है इसने सारे के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है. देयरफॉर दिस सेट इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस. So altogether we discussed that set of real numbers is a vector space. R2 set of all order pairs, that is also a vector space. R3, I said the generalization of R2, Rn is a generalization of Rn. C, that's the set of all continuous function we discussed right now, is also a vector space. CAB, that means a continuous function in an interval AB. That was continuous everywhere. This is continuous in the interval AB when A is not equal to B. So we are taking a closed interval. P is a set of all polynomials, whereas Pn is a set of polynomials of degree less than or equal to n. And Mn, that's a set of all matrices of m cross n, whereas Mnn is a set of all n cross n square matrices. तो ये सारे जो हैं ये वेल नोन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेसेस हैं जिनको हम बार बार यूजुअली स्टडी करते हैं, राइट. और ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर वेक्टर स्पेस एज वेल. ओके जी. नाउ वी टॉक अबाउट वेक्टर स्पेसेस व्हिच आर नॉट, sorry, sets which are not vector spaces. So I discussed one of that, in fact two of that. एक मैंने बात की थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो हैं वो कंडीशन नंबर 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, तो 0 जो है इट डजंट बिलोंग टू n, सो इट्स नॉट अ वेक्टर स्पेस. सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कंडीशन जो है वो 6 सेटिस्फाई नहीं होता. जो फर्स्ट 5 कंडीशन है वो सेटिस्फाई होते हैं. कंडीशन नंबर 6 जो है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अगर हम एक c मल्टीप्लाई कर देते हैं रियल नंबर के साथ,
सॉरी इंटीजर के साथ, x1 के साथ, तो क्या वो बिलोंग करेगा z को? तो ज़रूरी नहीं है कि वो z को बिलोंग करे. एंड वी टुक एन एग्जाम्पल, 10 is a natural is an integer and multiply that with by 3, 1 by 3, so we get 10 by 3, and 10 by 3 is not an integer. तो कंडीशन नंबर 6 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, देयरफॉर ये वेक्टर स्पेस नहीं है. उसको बिलोंग करना ज़रूरी है. जो हम ज़ीरो की बात कर रहे हैं ना, सिलेक्शन की बात नहीं है, ज़ीरो का होना ज़रूरी है, आइडेंटिटी एलिमेंट का होना ज़रूरी है. अगर मैं ज़ीरो कहीं और से पिक करके फिर ये चेक कर रहा हूँ तो 1 + 0 = 1, 2 + 0 = 2, बट ज़ीरो इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट. ज़ीरो वहाँ पे है ही नहीं, तो उसके साथ मैं ये कंडीशन कैसे चेक करूँगा, राइट? तो ज़ीरो का होना ज़रूरी है. तो ज़ीरो का उस स्पेसिफिक सेट में होना ज़रूरी है, राइट? We can't borrow an element from another set. The same thing I explained in set of polynomials as well. Polynomial of specific degree. हमने बात की थी डिग्री लेस देन आर इक्वल टू समथिंग, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिग्री 2 के. यानी अगर p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स अ सेट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दैट मीन्स a0 plus a1x plus a2x square with condition that a2 is not equal to 0. When a2 is not 0, it will become a set of polynomials of degree 2. तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता विद यूजुअल ऑपरेशन. रीज़न क्या मैंने बताया था, अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 1 + x², दूसरा मैं एलिमेंट ले रहा हूँ 1 - x + x -x², ये माइनस हो, तो इन दोनों का जब हम सम लेंगे 1 + x² प्लस 1 - x प्लस -x², तो यहाँ से x² ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों का सम आ जाएगा 2 - x. तो 2 - x जो है वो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, तो ये p को बिलोंग नहीं करेगा. तो कंडीशन नंबर 1 जो है इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा. बाकी फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है. मल्टीप्लिकेशन का ज़ीरो से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन में हम बात करेंगे. मल्टीप्लिकेशन के लिए जो c आता है ना हमेशा के लिए, अब देखें यहाँ पे इस केस में मैं पॉलिनोमियल बात कर रहा हूँ कहाँ से, इस सेट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन c मैं हमेशा के लिए r की बात करूँगा. जो कांस्टेंट आता है, स्केलर आता है, वो हमेशा के लिए कहाँ से आएगा, वो r से आएगा. यहाँ पे कोई भी सेट हो, चाहे p की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम pn की बात कर रहे हैं, चाहे हम mmn की बात कर रहे हैं, चाहे हम mnn की बात कर रहे हैं, हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, c विल बी ऑलवेज कमिंग फ्रॉम r. अब r में ज़ीरो मौजूद है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़ीरो उस सेट में होना ज़रूरी नहीं है. वो हम कहाँ से लेते हैं, वो हम यहाँ से लेते हैं. जो कांस्टेंट स्केलर हम ले रहे हैं वो उसकी बात हो रही है, तो उसके लिए ज़ीरो का वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है. ओके, इन इवन दो मैट्रिसेस में तो हमारे पास ज़ीरो नहीं होता ना. तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे ज़ीरो का, तो इसका मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, 0 0 0 0. और जब हम इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, c इंटू समथिंग मैट्रिक्स a, तो ये c जो है वो स्केलर होगा. अब ये c ज़ीरो है, अब ये ज़ीरो तो मैट्रिक्स में नहीं है, इधर सेट में नहीं है, तो ये ज़ीरो कहाँ से आएगा, ये ज़ीरो r से आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर से आएगा. इसलिए दोनों का डिफरेंस है, ठीक है? ध्यान में रख लें इस चीज़ को. एक c हम लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, और एक हम वेक्टर लेते हैं. तो वेक्टर्स जो होंगे, c स्केलर होगा और u वेक्टर होगा. तो c विल ऑलवेज कम फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, जिसका इसको हम फील्ड कहते हैं, राइट? और u जो होगा वो उस सेट से आएगा जिस सेट को हम, जी राइट, जब मैट्रिसेस हैं तो वहाँ पे ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब, ज़ीरो का मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स होगा. एज अ वेक्टर, एज अ स्केलर ज़ीरो रियल नंबर ही होगा. एज अ वेक्टर जब हम ज़ीरो लेंगे तो वो क्या होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स होगा. फंक्शंस में ये ज़ीरो फंक्शन होगा, पाइनॉमियल में ये ज़ीरो पाइनॉमियल होगा. जबकि ये c के लिए जब भी हमें ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़ीरो क्या होगा, वो रियल नंबर ही होगा.
ओके तो ये दो जो है ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बनाते, बल्कि मैंने नेचुरल नंबर का भी कह दिया, इवन नंबर्स दे आर आल्सो नॉट मेकिंग वेक्टर स्पेस एंड देयर मैनी मैनी सेट्स जो कि वेक्टर स्पेस नहीं बनाते. Polynomial of exactly degree 3 that's also not a vector space and so on. Polynomial of degree n जब हम लेंगे ना exactly degree n तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, एंड polynomial of degree less than or equal to n जब हम लेंगे तो वो फिर polynomial जो है वो वेक्टर स्पेस बनाएंगे. ओके अब हम बात करते हैं कुछ नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के साथ वेक्टर स्पेस को चेक करना. So if we talk about again the same thing R2, so R2 is again the set of all order pairs x, y, where x and y belongs to R. Okay, but in this case the operations are defined as, the first operation is the same usual one, the standard one, x1 y1 plus x2 y2. In this case we take the same standard operation, x1 plus x2 y1 plus y2. That's the first operation defined with respect to addition. With respect to multiplication, we are not using the standard operation, we are using, we simply sometimes इसके लिए हम ये notation use करते हैं, dot और फिर यूँ होता है x1 and x2, and इसको हम define ऐसे करते हैं, that is c into x1 और second जो है वो automatically 0 हो जाएगा. इस ऑपरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशन है कि अगर मैं आपको एक एलिमेंट दे दूं 3 4 और 3 5 और वट एवर, कोई भी मैं आपको दे दूं, और आपसे मैं कहूँ भाई इसके साथ ये वेक्टर u है, एंड आई आस्क यू कैन यू फाइंड 2 डॉट वेक्टर u, तो दैट वुड मीन 2 डॉट वेक्टर u, दैट इज 2 into u is taken as 3 5. तो जब मल्टीप्लिकेशन इसकी 2 इसके साथ करेगा तो 2 3 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, 2 3s are 6, लेकिन जब इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको 0 देगा, तो 6 0 आएगा. राइट तो हमारे पास एक कंडीशन है, कंडीशन नंबर 10, जो 10th एक्सियम है, 10 कंडीशन है, इट वाज 1 into u, दैट शुड बी u. लेकिन अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं लेट्स सपोज एक्स वाई के साथ, मेरे पास u यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, u लेट्स सपोज दैट इज एक्स वाई, कुड बी एनी नंबर, कुड बी एनी वेक्टर, सॉरी. तो 1 into एक्स वाई दैट वुड गिव यू व्हाट, that will give you 1 into x, and then we have 1 into y that give you 0. Is it equal to u? The answer is no, it doesn't, it's not same as u. इसका मतलब यह है कि कंडीशन नंबर 10 जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, therefore this set was vector space with standard operations. Right? But with this non-standard operation, this operation, one is standard, the other one is not standard, it is not a vector space. हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है. Okay, so let's talk about exercise 4.2. These are practice questions. You can take these questions from any book, right? I've just given some of them. So, yeah, you can follow any book. I think it's exercise 4.2 in Anton book as well, so you can follow that book as well. The question might be different, right? So it doesn't matter. So in question 1 to 6, you have to tell the zero vector in this case. Like in R4, what is the zero vector? That will be 0, 0, 0, and 0. In question 2, what is the zero vector? Just want to tell the zero additive identity, right? In this case, f of x is equal to 0 is the zero vector. M4 3 is a set of all matrices of order 4 3.
So in this case 0 means, in this case that's a 0. Keeping in mind, जो अभी सवाल किसी ने पूछा था, यहाँ पे 0 का मतलब ये होगा, यहाँ पे 0 का मतलब null matrix होगा. Null matrix are 4 cross 3, 0, 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 and 0. In this case, 0 would mean again a null matrix of 5 cross 1. So 0, 0, 0, 0, and 0. It's a polynomial of degree 3. So in this case, polynomial less than or equal to 3. So in this case, we take a small p of x that is equal to 0 is the additive identity in this case. Where in this case, 2 cross 2 matrices, so we'll take 0, 0, 0, and 0. This is R0 in this case. Okay. In question 7 to 12, you have to tell the additive inverse. Like if you have one element x, y, z, if that is an element in R3, so minus x, minus y, and minus z, it will be the additive inverse in this case. The same thing in matrices as well. Function is if y is equal to f of x is a continuous function, right? तो इसका जो इन्वर्स आएगा वो y is equal to minus f of additive inverse minus f of x होगा, and so on. अगर हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, it's a 1-4 order matrix, so we take a matrix A that will be A11, A12, A13, A14. Its additive inverse will be minus A, which will be minus A11, minus A12, minus A13, minus A14, and so on. Right, and obviously you can see the sum of these two matrices will be the identity matrix 0, 0. Then in question 13 to 36, you have to check whether the given sets are forming a polynomial of the following sets are forming vector space or not. If not, then you have to tell at least one axiom which is not satisfied. Right? So the question 13, we are saying M46. The M46, it is the set of all matrices of order 4 cross 6. So it is a vector space. Okay, with a standard operation, it is a vector space. M11, again it's a vector space as well. The set of all third degree polynomial, that means in this case we are talking about a set of polynomials whose degree is equal to 3. It's not less than or equal to 3. Okay, it's like a polynomials of the form a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube with condition a3 is not equal to 0. The rest could be 0. A3 will never be 0. So this set is not satisfying the first condition, because if you take one polynomial as 1 plus x minus x cube, if this is my p of x, small p of x, my q of x, if I take that as x square plus x cube, then p plus q, which will be the sum of these two, x cube cancel, so we get 1 plus x square, which does not belong to P. The condition number 1 is not satisfied, therefore it is not a vector space. I'm talking about question number 15. It is not a vector space. The same thing with question number 16 as well. It is a set of all fifth degree polynomials. Again, it's a degree 5. So it's not a polynomial, it's not a vector space because of condition number 1.
Question number 17 is saying the set of all first degree polynomial function ax with a is not equal to 0 whose graph passes through the origin. Right? So we are having what? All polynomials whose graph is passing through origin. So this is forming a vector space. So you can check it. The set of all first degree polynomial functions ax plus b whose graph don't pass through the origin. It means b is not equal to 0. This is again question number 18. It says that it is the set of all polynomials of the form ax plus b, right, with a and b both are not equal to 0. जब b 0 के बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये ऑरिजिन से पास नहीं होगा. लेकिन अगर हम एक वेक्टर ले लें p या एक एलिमेंट ले लें p दैट इज x माइनस 2, दूसरा पॉलिनॉमियल आप ले लें p q दैट इज इक्वल टू x प्लस 2, then their sum p plus q which is equal to x minus 2 plus x plus 2 that is equal to 2x, but this graph of this function passes through origin. इसमें b जो है वो 0 के बराबर आ गया है तो ये ऑरिजिन से पास हो रहा है. इसका मतलब ये है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा? कंडीशन नंबर 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, एक्सियम 1 इज नॉट सेटिस्फाइड. Therefore, it is not a vector space, not a VS. I may use VS in future. तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा. तो आपने सिर्फ एक कंडीशन ऐसा बताना है, एटलीस्ट आप 2 बता सकते हैं, आप 3 बता सकते हैं जिसको जो सेटिस्फाई नहीं करेगा. अब देखिए इसमें A और B दोनों 0 के बराबर नहीं है तो इसमें 0 भी नहीं होगा, बिकॉज अगर A 0 नहीं है B 0 नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें 0 मैट्रिक्स 0 पॉलिनॉमियल नहीं होगा, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा इसमें. अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा इसमें. तो बहुत से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप एक कंडीशन ऐसा बता दें जो कि सेटिस्फाई ना हो. The same thing in question number 19 already done. It's a set of all polynomials of degree 4 or less. So in this case they are talking about P4. So P4 is a set of all polynomials whose degree is less than or equal to 4. तो ऑलरेडी भी चेक कि Pn जो है वो क्या है, वो वेक्टर स्पेस बना रहा है क्योंकि इसमें पॉलिनॉमियल्स होते हैं इनका डिग्री लेस देन और इक्वल टू n होता है. तो इट इज़ आल्सो अ वेक्टर स्पेस. द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शंस हुज ग्राफ पासिस थ्रू द ऑरिजिन. तो अगेन इसका मतलब है वी टॉक अबाउट ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शंस लाइक ax स्क्वायर. तो जिस तरह से ये ax की बात हो रही है इस तरह से ax स्क्वायर की बात भी हो रही है, राइट. दिस इज अ पॉलिनॉमियल व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन. तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है. Right, question number 21. Now in this case it says that this set is, if you call this set V, so V is the set of all order pairs of the form. ये कंप्लीट नहीं है, उसमें सिर्फ वो है कि जो x कंपोनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, वेयर y इज एनी रियल नंबर. सिर्फ ये कंडीशन है कि इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव होगा. यानी इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं. क्या 0 2 इसका एलिमेंट हो सकता है? द आंसर इज येस. क्या 3 5 -5 हो सकता है? द आंसर इज येस. Right? Can this set contains -1 3? The answer is no. -1 3 doesn't belong to it. Right? तो इसको बिलोंग नहीं करेगा, एंड सो ऑन मैनी. तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो द आंसर इज नो. कंडीशन नंबर 6 को चेक करें. 1 से 5 तक सेटिस्फाई होंगे, उसे कोई मसला नहीं है, बिकॉज अगर मैं 2 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, ये एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट लिया, इन दोनों का सम लिया,
तो क्या होगा, क्या उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव बनेगा? ऑब्वियसली नॉट. तो इफ x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, सो x प्लस वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो ये सेटिस्फाई होगा. सेकेंड इज कम्यूटेटिव है, ओके. थर्ड इज एसोसिएटिव, यस. फोर्थ इज क्या इसमें जीरो है? द आंसर इज यस, इसमें है. सॉरी, फिफ्थ वन भी सेटिस्फाई नहीं होगा, माई फॉल्ट. बिकॉज अगर 1 3 बिलोंग कर रहा है v को, तो क्या -1 -3 बिलोंग करेगा v को? इट डजंट बिलोंग टू v बिकॉज इसका नेगेटिव हो जाएगा. तो कंडीशन नंबर 5 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, डजंट सेटिस्फाई. कंडीशन 6 भी नहीं हो रहा बिकॉज अगर मेरे पास 1 3 है, इफ दैट बिलोंग्स टू v एंड वी मल्टीप्लाई दिस बाय c इज इक्वल टू -2, तो c इंटू v जब हम लेंगे दैट बिकम्स -2 -6. दिस इज नाउ नेगेटिव, तो ये बिलोंग नहीं करेगा v को. तो कंडीशन नंबर 6 भी सेटिस्फाई नहीं होता. आगे फिर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो आप कोई भी बता सकते हैं 5 और 6 में से दोनों सेटिस्फाई नहीं होते. तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है. इट्स नॉट बी एस. Similarly, 22. With same conclusion, 22 is also not a vector space because it says that x is positive and y is positive. Now, if you go for again condition number 5, if x, y belongs to v, so minus x minus y doesn't belong to v. So, condition number 5, 6 दोनों satisfy नहीं होते. The set of all real numbers जिसमें दोनों कंपोनेंट सेम हो और x अब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, x with x belongs to R, तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? The answer is yes, because if we have one element x1, the second element is x2, you add them, we get x1 plus x2 x1 plus x2. तो इस सेट की करेक्टरिस्टिक यह है कि इसमें x और y दोनों कंपोनेंट सेम होंगे. तो जब अपने दो एलिमेंट यहाँ पे x और y सेम है, यहाँ पर x और y सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तब भी x और y सेम आते हैं. तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड. कंडीशन नंबर 2, 3 ये भी सेटिस्फाई होंगे बिकॉज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव जो हैं वो R2 में होते हैं, तो इधर भी होंगे. कंडीशन नंबर 4, क्या 0 0 इसमें मौजूद है? द आंसर इज यस, बिकॉज यू सी दैट 0 भी और 0 दोनों सेम है, तो ये भी इसको बिलोंग करेगा. क्या नेगेटिव मौजूद होंगे इसका? द आंसर इज यस. अगर x बिलोंग कर रहा है, इफ x में दोनों कंपोनेंट सेम है, तो -x में भी दोनों कंपोनेंट सेम होंगे, तो ये बिलोंग करेगा. सिमिलरली क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं बीटा कंडीशन की तरफ जाऊं, ये अल्फा कंडीशंस हो गए. तो इसमें अगर मैं सपोज करें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ c के साथ, c को x के साथ, तो ये बन जाएगा cx. तो दोनों अगेन सेम है, राइट? दोनों सेम है, तो ये बिलोंग करेगा v को. या देखिए ना, अगर कंडीशन 5 में यही है ना, अगर आपके पास एक वेक्टर 2 2 मौजूद है, दोनों कंपोनेंट सेम है ना, तो इसका नेगेटिव ले लो, -2 -2. क्या इसके कंपोनेंट्स भी सेम है कि नहीं है? तो जब ये यहाँ मौजूद है, यानी x कैन बी एनी रियल नंबर, तो ये दोनों मौजूद हैं, तो इसका नेगेटिव भी मौजूद होगा, लाजमी बात है. तो जब 2 2 मौजूद है, तो -2 भी मौजूद होगा इसमें. द सेम थिंग हियर, अगर आपके पास x है, तो आपने कोई भी स्केल मल्टीप्लाई किया तो वो भी जो आएगा उसमें मौजूद होगा. बाकी भी जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि वो तो जो कंडीशन R2 में सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो इधर भी सेटिस्फाई होंगे. Right, the same thing with question 24, 25 and 26 as well. You can check that. If you have any question, then you may ask me. You can obviously WhatsApp पे पूछ सकते हैं. ये आपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 42 तक करने हैं.
ठीक है. Then in next lecture we will be talking about vectors subspaces.